Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Like this video to show your support. Leave a comment below. We'd love to hear your thoughts or questions. Share this video with friends who might enjoy it. And don't forget to subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means everything to us. Thank you. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारेण सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणार्थं 500,000,025,000,000,000 केन्द्रीय परिव्ययेन सह सार्थक पीडीएस योजनायाः विस्ताराय स्वीकृतिः प्रदत्ता। सर्वोच्च न्यायालयेन मतदातृसूच्याः विशेषगहन पुनरीक्षणाय निर्वाचनायोगस्य अधिकारः न्यायोचितम् अङ्गीकृतम्। देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानम् अवलोक्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान्। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षायाः प्रश्नपत्र गोपनभंग प्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अपि च आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चण्डीगढ़ क्रीडाङ्गणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। आर्थिक प्रकरण मंत्रिमण्डल समित्या अद्य 16 वित्तायोगस्य पुरस्कार चक्रावधौ सार्थक पीडीएस इति अम्ब्रेला योजनायाः निरन्तरतायै 3,525,000,000,000 केन्द्रीय विनियोगः करिष्यते। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना राज्यसंस्थाभ्यः राज्यान्तर्गत खाद्यान्न परिवहनाय साहाय्यं प्रदास्यति। सहैव उचितमूल्यापणानां सुदृढीकरणं करिष्यति तथा च सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणेऽपि सहयोगं करिष्यति। इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं। मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्यां योजनायां कृत्रिम मेधायाम् आधारिताः निर्मल आशा सक्षमाख्याः 3 घटकाः भविष्यन्ति। तेन स्पष्टीकृतं यत् निर्मल इति कृत्रिम मेधा चालितः वास्तविक समय पीडीएस लाभार्थी पञ्जीकरण मञ्चः अस्ति। सहैव आशा इति बहुभाषीय कृत्रिम मेधा आधारिता जनपरिदेवना निवारण प्रणाली तथा च नागरिक संवाद मञ्चः वर्तते। एवं च सक्षमः इति कृत्रिम मेधायुक्तम् आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन तन्त्रमस्ति। अनेन सहैव आर्थिक प्रकरण मंत्रिमण्डल समित्या राज्यान्तर्गत खाद्यान्न परिवहन व्ययस्य तथा उचित मूल्यापन विक्रेतॄणां लाभांश सीमायाः पूर्तये केन्द्रीय सहायता नियमेषु संशोधनस्य तथा च पूर्ववत वित्तपोषण प्रारूपस्य निरन्तरतायाः अपि दृढ निर्णयः कृतः। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य भारत निर्वाचनायोगेन प्रदत्त मतदातृसूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षणस्य वैधता प्रमाणीकृता। तेनोक्तं यत् एतादृशं विशेष पुनरीक्षणं निष्पक्ष स्वतन्त्र निर्वाचनानां संवैधानिक अनिवार्यतां संवर्धयति। न्यायालयेन प्रतिपादितं यत् जनप्रतिनिधित्व अधिनियमः 50-19-तमः 24+300 अनुच्छेदस्य नियमानुसारं निर्वाचनायोगस्य पार्श्वे विशेष गहन पुनरीक्षणस्य पूर्णा शक्तिः वर्तते। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य तथा च न्यायाधीशस्य जयमाल्य बागची इत्यनयोः पीठेन एतत् निर्णयवचनं तासां याचिकानां सन्दर्भे प्रख्यापितम्, यासु गतवर्षे जून मासे निर्वाचनायोगेन बिहार राज्ये विशेष गहन पुनरीक्षणार्थं प्रसारिता अधिसूचना समाहूता आसीत्। मुख्य न्यायाधीशेन सूर्यकान्तेन प्रख्यापिते निर्णयपत्रे स्पष्टीकृतं यत् यदा स्वयमेव विधिः कारणानि अभिलेख्य केनापि प्रकारेण कस्मिन्नपि समये
विशेषपुनरीक्षणाय आयोगम् अधिकरोति तदा इयं विशिष्टा प्रक्रिया केवलं तस्मात् कारणात् अवैधतां न प्राप्नोति यदेषा सामान्यपुनरीक्षणस्य पारम्परिकप्रक्रियाणां सर्वथा अनुरूपा नासीत्। देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानम् अवलोक्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान्। एकस्मिन् सामाजिक सञ्जालीय सन्देशे श्रीमोदी सर्वान् आर्द्रीकरणं रक्षितुं गृहात् बहिः गमनावसरे च जलं स्थापितुं परामर्शं प्रदत्तवान्। दैनिक जीवने उष्णतापजनितकष्टानां विषये चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् एतादृशायां ऋतौ संवेदनशीलता एव महत्तरः आधारः भवति। तेन पिपासितेभ्यः चषकपरिमितं जलं प्रदातुं परामर्शो प्रदत्तः। सः सर्वान् स्वपरिजनैः आत्मीयैः च सह निरन्तरं सम्पर्कं स्थापयितुं तेषां कुशलवार्तां प्रष्टुं भूरि जलं पातुं मध्याह्ने प्रचण्डे आतपे बहिर्गमनं वर्जयितुं तथा च यथाशक्यं विश्रामं कर्तुं स्मारितवान्। तेन पशुपक्षिणां कृतेऽपि करुणां प्रदर्श्य गृहात् बहिः अलिन्देषु छदिषु आपणेषु तथा कार्यालयेषु जलपूरितं लघुपात्रं स्थापयितुं निर्देशो विहितः। श्रीमोदिना तेषां प्रयासानां भूरि प्रशंसा कृता ये पिपासितजनकल्याणाय स्वगृहाणाम् आपणानां च बहिः मृत्तिकाघटेषु शीतलं जलं स्थापयन्ति। प्रधानमन्त्री सर्वान् एतेषु कष्टकरदिनेषु परस्परं करुणाप्रदर्शनार्थं साग्रहं प्रार्थितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा प्रश्नपत्र गोपन भंग प्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अनेन तावत् केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्मिन् प्रकरणे दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर, अहिल्यानगरेभ्यः एतावता 13 आरोपिणः निगृहीताः। अस्मिन्नेव क्रमे लातूर वास्तव्यः कश्चन चिकित्सकः डॉक्टर मनोज शिरूरे इत्येषः नीट प्रश्नपत्रभेद प्रकरणे निगडितः। अन्वेषणाभिकरणानुसारं कोचिंग संस्थापकस्य पुत्रेण सह 3 छात्राणां कृते अभियुक्त पीवी कुलकर्णी इत्यमुना रसायनशास्त्रस्य प्रश्नान् प्रापयितुं मुख्यभूमिका निर्व्यूढा। अपरः निगृहीतः अभियुक्तः तेजस हर्षद कुमार शाहः वर्तते, यः पुणे नगरस्य डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल अकादमी इति कोचिंग संस्थायां भौतिकशास्त्रस्य प्राध्यापकः अस्ति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन एतावता देशस्य 49 स्थानेषु सहसान्वेषणं विहितं, यत्र अनेके आपत्तिजनकाभिलेखाः, अङ्कीयसङ्गणकाः, दूरभाषयन्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः सबलं प्रोक्तवती यत् देशस्य विकासाय पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य विकासः सर्वथा अनिवार्यः वर्तते। अद्य गंगटोक नगरे सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्त समारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपति मुर्मुः छात्रान् स्वकीयविचारैः, नवोन्मेषेण, परस्परविश्वासेन च राष्ट्रनिर्माणे योगदानं विधातुं परामर्शं प्रदत्तवती। मुर्मू महोदया अवदत् यत् शिक्षा एव सशक्तीकरणस्य परम मार्गः अस्ति। नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े। कनाडा यात्रायाः द्वितीय दिवसे भारतस्य वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः कनाडा देशस्य टोरंटो नगरे वरिष्ठ व्यापारिक नेतृभिः, संस्थागत निवेशकैः च सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विहितवान्। यात्रा प्रसंगे श्री गोयलः कनाडा देशस्य अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मन्त्रिणा मनिन्दर सिद्धू इत्यमुना सह साक्षात्कृत्य भारत कनाडा देशयोः वर्धमान पूरकताम् अधिकृत्य चर्चां कृतवान्। तथा च सुदृढ़ सर्वकारोद्योग सहयोगेन चालितस्य अधिक सशक्तस्य पूर्वानुमानयोग्यस्य च व्यापार पारिस्थितिकी तन्त्रस्य आवश्यकतायामपि बलं प्रदत्तवान्।
IPL क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहालीनगरस्य न्यू चण्डीगढ़ क्रीडाङ्गणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। एषा स्पर्धा सायं 7:30 समारप्स्यते। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशालानगरे आयोजिते द्वन्द्वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 92 धावनाङ्कैः पराजितम् इति वार्ताः।